with the word nuisance in their name. The two forms of nuisance are quite distinct torts and must be considered separately. The first is private nuisance, which deals with indirect interference affecting the use and enjoyment of land, such as excessive noise and the emission of smells or noxious fumes. इसका वो ब्लर हो गया है। है ही ऐसा। अब ठीक हो गया। हाँ, फोकस ठीक हुआ है ना। एक और एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है। The first is private nuisance, which deals with indirect interference affecting the use and enjoyment of land, such as excessive noise and the emission of smells or noxious fumes. It is essentially a remedy for landowners in respect of indirect harm affecting their property. The second is public nuisance. Public nuisance has a wider application. It is essentially a form of criminal liability arising from a wide range of antisocial activities, but individual tort actions are limited to claimants who have experienced special damage above and beyond that suffered by the rest of the public. ठीक है जी, समझ आ गई? प्लीज प्राइवेट न्यूसेंस थोड़ा सा पब्लिक में नहीं जाते, थोड़ा सा प्राइवेट न्यूसेंस के ऊपर आ जाए। प्राइवेट न्यूसेंस में क्या चीज समझाना चाह रहे हो? बहुत शदीद सख्त परेशानी है, जाती परेशानी। आप जिस मर्जी में एक्सप्लेन कर दें टू द एक्सटेंट ऑफ टॉर्ट लॉ। नहीं, मैं समझा दूंगा, मैं समझा दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे पहले ये बताना है कि ये क्यों बोला था, से समझ आ गई, ये क्यों बोला। तो मैंने क्या है, समझ आ गई है, कह रहा है अच्छा यूं भी कह रहा है, साथ रुक गया है कि आप पूछेंगे मुझसे। ये जो सेकंड पैरा है ना, ये पढ़, ये एक्सप्लेन कर। सेकंड पैराग्राफ या सेकंड लिखा हुआ स्टार्ट में उसके, द फर्स्ट इज प्राइवेट न्यूसेंस। इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस क्या है और डायरेक्ट इंटरफेरेंस क्या है? जो डायरेक्ट इंटरफेरेंस वाला मामला है ना, उसको आप रिलेट कर सकते हैं ट्रेसपास के साथ, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टॉर्ट लॉ, ठीक है। और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस ऐसे है, अब वो तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस है ना, फिजिकल अपीयरेंस भी है, सारा कुछ है उसमें। इनडायरेक्ट ऐसे है कोई ऐसी चीज जो आपकी प्रॉपर्टी में आ भी नहीं रही और आपको डिस्टर्ब भी कर, जैसे मैंने उसकी एग्जांपल आपको दी थी, क्रिमिनल लायबिलिटी कोई नहीं बनती किसी बंदे की अगर वो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट प्रोवाइड कर रहा है, लॉ भी राइट प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपनी
प्रॉपर्टी जो है उसको फ्रीली एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें जो मर्जी करें, वो आपकी अथॉरिटी है, ठीक है? आप उसके ऑनर हैं, ठीक हो गया। तो आप अगर उसमें जो है वो गाना कर रहे हैं और म्यूजिक इतना लाउड है आपका, जिससे पड़ोसी तंग हो रहे हैं, तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी तो बनती कोई नहीं है, तो आप उसको कहाँ पे क्लेम करेंगे जाके, ठीक है। आवाजें, स्मेल, कोई ऐसी कोई केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है जिसके फ्यूम्स जो है वो आपको डैमेज कर सकते हैं, या उसकी स्मेल इतनी बुरी है। फीड फैक्ट्री देखी है कभी आप लोगों ने? जो फीड फैक्ट्री होती है, नहीं केमिकल होता है लेकिन उसकी स्मेल नहीं होती उसमें। फीड फैक्ट्री तो अपने आसपास के 6-7 किलोमीटर के रेडियस में ना उसने स्मेल की हुई है। मुबीन ने देखी होगी, मुबीन के इलाके में लगी। हाँ, ठीक है। तो अब आप उसको कहाँ पे उसके लिए अपना ग्रीवियंस रिड्रेस करवाने के लिए कहाँ जाएंगे? क्रिमिनल लॉ तो उसमें कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर रहा आपको, ठीक है। एक ऐसी चीज है जो बंदा अपनी प्रॉपर्टी में कर रहा है, ठीक है। तो उसका इफेक्ट आप पे डायरेक्ट तो नहीं हो रहा, इनडायरेक्टली हो रहा है ना। देखिए, एक तो ट्रेस पास है, हमने किया ट्रेस पास में, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर हो गया, ठीक है। उसका उसके साथ डायरेक्ट लिंक है, आपकी प्रॉपर्टी में एंटर हुआ ना, तो आपकी प्रॉपर्टी में जब वो एंटर हुआ तो आपके साथ उसका डायरेक्ट लिंक डेवलप हो गया, ठीक है। इस सिनेरियो में आपका उसके साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी में वो एंटर नहीं हो रहा, आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन वो आपको साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली किसी और एंगल में डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। अब वो खुद भी नहीं आ रहा, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट वेज में आप उससे इनकन्वीनियंट फील कर रहे हैं, ठीक है। आप पेशेंट हैं, लेट्स सपोज, और आपके पड़ोसी ने ऊंची आवाज में गाने लगाए हुए हैं, पार्टी कर रहा है वो, ठीक है। तो आपका तो जो इफेक्ट है वो एक नॉर्मल बंदे से ज्यादा होगा, ठीक है। हो सकता है आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो मजीद बिगड़ जाए। आप इस क्लेम को कैसे रिड्रेस करवाएंगे? कौन सा लॉ आपको रेमेडी प्रोवाइड करेगा? ना क्रिमिनल करता है, ना सिविल करता है, ना कोई और लॉ करता है, ठीक है। टॉर्ट लॉ जो है ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करता है, ठीक है। स्टार्ट में मैंने बताया था, साथ में याद नहीं रहा, उसमें मेंशन किया हुआ है, तो पढ़ा भी नहीं है। Indirect interference affecting the use and enjoyment of land, ठीक है। A remedy, such as excessive noise and the emission of smells or noxious fumes, ठीक हो गया। अब अगर ये पढ़ लेते तो आपकी परेशानी दूर हो जाती। Public nuisance has a wider application. It is essentially a form of criminal liability arising from a wide range of anti-social activities, but individual tort actions are limited to claimants who have experienced special damage above and beyond that suffered by the rest of the public, ठीक है। अब पब्लिक न्यूसेंस क्या है कि जो एक ऐसी न्यूसेंस जो पब्लिक एट लार्ज को डिस्टर्ब कर रही हो, लेकिन लाइबिलिटी कब अक्रू होगी किसी इंडिविजुअल की? जब उसका हार्म जो है वो एक्सेसिव होगा अदर देन पब्लिक, रेस्ट ऑफ द पब्लिक, ठीक है। उनको इक्वली वो जो इफेक्ट कर रही होगी वो पब्लिक न्यूसेंस के अंडर फॉल करेगा, लेकिन इंडिविजुअल क्लेम जो है वो तब होगा कि जितना सबको नुकसान पहुंचा उससे ज्यादा किसी एक को पहुंचे, ठीक है जी। The different forms of nuisance
It is important to ascertain exactly when the torts of nuisance will arise and how a court might be expected to deal with them. This will involve consideration of liability. Should the court intervene and remedies? If so, how? In particular, torts protecting rights to land, private nuisance, and public nuisance raise fundamental questions concerning how we as a society live together. So to what extent should householders have the freedom to do what they want in their own property? How far, how far should their liability be restrained by their neighbors? In seeking to balance the interest of all parties, the courts must make difficult decisions which directly affect the quality of people's life. ठीक है. बेसिक पर्पस इसका जो है ना, जो आपकी लिबर्टी है एंजॉयमेंट ऑफ लैंड की, उसको रिस्ट्रिक्ट करना इस हद तक कि उससे किसी और को नुकसान ना पहुंचे. There are three main types of nuisance which should be distinguished: private nuisance, public nuisance, statutory nuisance. Private और public हम ऊपर पढ़ चुके हैं. Statutory nuisance is beyond the scope of this course. The Environmental Protection Act 1990 Part 3 enables local authorities to enforce regulation of environmental matters such as pollution and waste disposal. You should note that public enforcement, whether civil or criminal, is much more common than a civil action. It is important that you obtain a clear understanding of private nuisance and, to a lesser extent, the basic principle of public nuisance. ठीक है जी. Basic definition: private nuisance. Infield and Dolowitz define private nuisance as an unlawful interference with a person's use or enjoyment of land or some right over or in connection with it. ठीक है जी. साथ एक दफा ये डेफिनेशन जरा ऊंची आवाज में पढ़. प्राइवेट न्यूसेंस से पढ़े, उनके नाम छोड़ दें. समझ आइए कि क्या कह रहे हैं. समझ आइए साथ कि बेसिकली प्राइवेट न्यूसेंस क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्या डिफाइन. हाँ हाँ, बेसिकली मकसद क्या है उसका. आसान अल्फाज में समझा दें, कोई मसला नहीं. खराबी न्यूसेंस की सेंस में जब भी आप जाएंगे ना, तो आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है. न्यूसेंस में एक चीज हमेशा याद रखनी. न्यूसेंस में जो आपका बेसिक इफेक्ट होगा ना उस एंजॉयमेंट ऑफ लैंड के अगेंस्ट, ठीक है, वो ये होगा कि आपको इनडायरेक्टली कोई तंग कर रहा हो. डायरेक्ट इंटरफेरेंस उसकी कभी भी नहीं. न्यूसेंस में आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि आपको जो तंग करने का एलिमेंट है ना, वो इनडायरेक्ट वे में होगा. ठीक है. जैसे मैं खुद तंग ना करूं आपको, आप अपनी कुर्सी पे बैठे एंजॉय कर रहे हैं, मैं अबू बकर को के पंखा लेके ना हाथ से इसको तेज तेज पंखा जो है, अबू बकर मार भी नहीं रहा, कुछ कह भी नहीं रहा,
लेकिन वो पंखे की हवा इस ठंड में आपको तंग करेगी, और सोने पे सुहागा हो जब आप नहा के आए। ठीक है। और अब वक़्त से अगर पंखा तेज करवाना हो तो आपके हाथ में येलो हैंगर हो। Public nuisance. Public nuisance, in contrast, is both a crime and a tort. It is defined by Ronald L.J. in Attorney General versus PYA Queries Limited. Any nuisance is public, which materially affects the reasonable comfort and convenience of life of a class of her magistrate subject. The sphere of the nuisance may be described generally as the neighborhood. But the question whether the local community within that sphere comprises a sufficient number of persons to constitute a class of the public is a question of fact in every case. Although the courts frequently draw comparisons between private and public nuisance, they are in reality very different torts which seeks to protect different interests and have little in common apart from their name. Private nuisance will be relevant where the claimants suffer interference with the use of their land. Public nuisance has a different concern. This is usually a disturbance which affects the public in general and which affect the public in general and the claimant in particular. It is important to ascertain what kind of nuisance is applicable, whether liability arises, and if not, whether there are any other relevant torts, for example, negligence. ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि पब्लिक और प्राइवेट न्यूसेंस जो है ये टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है। इनके सिर्फ और सिर्फ नाम मिलते जुलते हैं, बाकी ये टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक हो गया जी। एकदम दोनों में जो प्रोसेस में आएगा इंटरनेट पब्लिक में वही यही तो कह रहे हैं, पब्लिक में बाज औकात जो है वो क्रिमिनल लायबिलिटी भी अप्रूव होती है। ठीक है जी। उर्दू में मिसाल ये है कि लेट सपोज एक फैक्ट्री लगी हुई है किसी एरिया में। ठीक है। उससे जो केमिकल्स बना रहे हैं, कोई ऐसी चीज बना रहे हैं, उससे पब्लिक एट लार्ज जो है वो इफेक्ट हो रही है। ठीक है। उसके फ्यूम्स जो होंगे, नॉक्शियस सब्सटेंस है, वो होगा तो वो आपको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। अब वो जब इफेक्ट करेगा तो वो क्रिमिनल क्रिमिनल लायबिलिटी भी अप्रूव करेगा। ठीक है। वो तो हेल्थ डैमेज कर रहा है लोगों की। ठीक है। तो वो क्रिमिनल लायबिलिटी भी अप्रूव करेगा। प्राइवेट न्यूसेंस जो है उसमें इंडिविजुअल इफेक्ट हो। ठीक है। पब्लिक न्यूसेंस वो होगी जिसमें पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट हो। ठीक हो गया जी। Private nuisance. Three types of private nuisance can arise in practice. Physical injury to land, for example, by flooding or noxious fumes. Substantial interference with the enjoyment of the land, for example, smells, dust and noise. Noxious fumes से ऊपर परेशान हो रहा है। शांत हो। Noxious fumes ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जो खतरनाक हो सकते हैं। वैसे जैसे लकड़ी का धुआं होगा ना, वो आपके लिए उतना नुकसानदेह नहीं है जितना प्लास्टिक जलने से जो धुआं निकलेगा ना वो आपको अफेक्ट करेगा। ठीक हो गया। मोस्टली आप इनको इसी तरह कंसिडर करें, कोई भी ऐसी ऐसी चीज जिससे एक तो नेचुरल चीजें होती हैं। नेचुरल चीज आपको उतना इफेक्ट नहीं करेगी जितना अननेचुरल या केमिकल से बनी हुई चीजें हैं, उनको आप आग लगाते हैं या उनके साथ कोई और मामला करते हैं तो उनसे जो फ्यूम्स डेवलप होते हैं ना, ठीक है,
वो जो धुएं उठेंगे, वो जो फ्यूम्स डेवलप होंगे, वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह। ये आपने माइंड में रखना, सबसे आसान चीज ये। ठीक है, लकड़ी का धुआं आपको नुकसान नहीं दे, ठीक है, लेकिन सिगरेट का धुआं आपको नुकसान दे, प्लास्टिक का धुआं जो है आपके लिए नुकसान दे। ठीक हो गया। कोई केमिकल फैक्ट्री है, ठीक है, वो या कोई आप केमिकल के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई इसी तरह लैब खोल के बैठा हुआ है पड़ोस में, ठीक है, तो वो केमिकल से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, अपने लैब रेट से हट के वो एक्सपेरिमेंट ठीक है, तो उससे जो फ्यूम्स डेवलप होंगे ना, वो नुकसान भी होंगे। कोई नीचे बैठा हुआ है, ये कर रहा है, हाँ, और ऊपर बैठा दिया जाके किसी और को। अच्छा जी, फिजिकल इंजरी टू लैंड की बात हो रही है, ठीक है जी। आगे है जी, सब्सटेंशियल इंटरफेरेंस विद द एंजॉयमेंट ऑफ द लैंड। ठीक है, अब सब्सटेंशियल इंटरफेरेंस किस सूरत में होगी? फॉर एग्जांपल स्मेल्स, डस्ट एंड नॉइज। ठीक हो गया जी। encroachment on a neighbor's land, for example, by spreading roofs or overhanging branches, which is of minor significance. All three forms seek to protect the claimants and enjoyment of land from an activity or state of affairs for which the defendant is responsible. Case law example is in Devi versus Haro Corporation, roots of trees which were growing on the defendant corporation's property had penetrated the land of plaintiff's adjoining property. This encroachment caused damage to the plaintiff's house. In the Court of Appeal, Lord Goddard said, if trees encroach, whether by branches or roots, and cause damage, an action for nuisance will lie. No distinction is to be drawn between trees which may have been self sown and trees which were deliberately planted on land. ठीक है जी, आसान अल्फाज में समझा। मुझे बैच 2 का लड़का याद आ गया ये बात सुनने के बाद। एक बंदे ने दरख्त लगाया हुआ था, ठीक है, उस दरख्त की जो जड़ें हैं वो उसके पड़ोसी के घर में चली गई, ठीक है, तो उसने क्लेम किया कि इसकी ये जो इसका दरख्त जो है, इसकी वजह से मेरी जो है प्रॉपर्टी डैमेज हुई, और कोर्ट ने उसको उसका जो क्लेम है उसको एक्सेप्ट किया, और कोर्ट ने कहा कि दरख्त या खुद लगाया हो जानबूझ के तब भी, या दरख्त की जड़ें, दरख्त ही ऐसा हो जिसकी जड़ें फैलने वाली तब भी, जो डिफेंडेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, लाइबल होगा। ठीक है, नेचुरल चीज में भी ना, तो आप ऐसा दरख्त लगाए ना जिससे दूसरे की प्रॉपर्टी इफेक्ट हो, ठीक है, आपने बेल लगाई दी है, वो जा रही है ट्रेवल करती हुई उसके घर में घुस गई है, ठीक है, उसने वहां पे चीजें रखी हैं जो उससे इफेक्ट होगी, तो रिस्पॉन्सिबल आप है ना, आपने क्यों नहीं ध्यान किया, अपने घर में फैलाए ना उसको दूसरे घर में हाँ, मैं इसीलिए कह रहा था बहुत ख्याल करना पड़ेगा, और वहाँ पे बहुत प्रैक्टिस होती है, टॉट की बड़ी प्रैक्टिस है वहाँ। हाँ, यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ ना, बेसिकली हम बदनाम है, ठीक है, वो इस तरह की ये जो कंपनसेशन कल्चर है ना, इससे वो बहुत बेनिफिट है, वो इंतजार में होते हैं कोई उनको मारे आके, ठीक है, हाँ, कोई नुकसान पहुंचाए। हाँ,
वो असल में बिल्डिंग्स वहां पे ज्यादातर वुडन मटेरियल यूज होता है ना, तो वो उसमें से तो आवाज आराम से क्रॉस होगी। इसकी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। ये हम जब जाते हैं 303 है कौन सा रूम, कौन बहादुर जी की खौफनाक क्लास है। हाँ, वो उदम मचाया होता है साथ, तो सारी आवाजें आ रही हैं। लेकिन वो उसके साथ जो ये जो कंपनसेशन लेने वाला सीन है ना, ये उनको बड़ा फायदा देता है ना। वो जितने पैसे उन्होंने कमाने हैं एक कंपनसेशन के लिए, कोई ऐसा कोई इनके पास क्लेम आ जाए जिसमें कोर्ट कंपनसेट करे, 2 महीने पैसे नहीं कमाएंगे बच के। सारा टॉर्ट नहीं सीख के जाना पड़ेगा, सीख लोगे। तुमने बस करना ही है कि जाने से पहले ज्यादा से ज्यादा टाइम अबू बकर के साथ स्पेंड करना है। अबू बकर तुम्हें बताता जाएगा तुम्हारी हरकतों को देख के कौन सी टॉर्ट फॉल करी है कौन सी नहीं करी। Who can sue? This is fundamental both in understanding the operation of the tort private nuisance and in ascertaining who has cause of action in any given case. As we know already, the tort of private nuisance protects claimants against interference with the use or enjoyment of their land. In other words, it protects their rights in their land. It is hardly surprising, therefore, that on, uh, that only those with rights in the land, namely an interest in land or exclusive possession, will be liable to sue. See case so and so and the House of Lords in Hunter versus Canary Wharf Limited. ये तो बड़ा खौफनाक नाम लिखा है। हाँ, versus Bush. The Court of Appeal held the plaintiff who lived. See? हाँ, held that the plaintiff who lived. जैसे कि कल वो केस लॉ पढ़ा रहा था ना, तो कोस्टा वर्सेस एनल था और वैन जेन एंड लूस वाला केस था ना। हाँ, कोस्टा कोस्टा वाला केस था, दूसरा वो वैन जेन एंड लूस पे प्रिंसिपल लेट डाउन किया है ना। वो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो नाम पढ़े, मैं कहा जी पढ़ो। नाम पढ़े, हर बंदा जिसने पढ़ा है ना उसने अपने ही एंगल में पढ़े सारे सारे सारे। The plaintiff, who lived with her mother and had no proprietary interest in the property, was entitled to an injunction to restrain a private nuisance in the form of telephone harassment. Dylan LJ said, to my mind, it's a ridiculous if in this present age the law is that the making of deliberately harassing and hmm, deliberately harassing and presenting telephone calls to a person is only actionable in the civil courts if the recipient of the calls happens to have the freehold or leasehold proprietary interest in the premises in which he or she has received the calls. However, in Hunter, the majority in the House of Lords overruled this decision and put beyond doubt the principle that a proprietary interest in land is required to found an action in private nuisance. Nevertheless, as you will see below, it has been questioned whether the exclusion of family members living in the home is consistent with Article 8 of the European Convention on Human Rights. What amounts to a private nuisance? There is no better definition that of Lord Right in Sadley Denfield versus Oak Allen case. A balance has to be maintained between the right of occupier to do what he likes with his own and the right of his neighbor not to be interfered with. It is impossible to give any precise or universal formula, but it may broadly be said that a usual test is perhaps what is reasonable according to the
ordinary usage of mankind living in society, or more correctly, in a particular society, the forms which nuisance may take the protein. Certain classification are possible, but many reported cases are no more than illustration of particular matters of fact which have been held to be nuisances. The test is one of the reasonable tests, balancing the interests of defendants to use their land as is legally permitted against the conflicting interest of claimants to have quiet enjoyment of their land. Such a balancing exercise places a considerable amount of discretion on the judge. It is impossible to establish a legal rule as to what is a reasonable use of one's land. As Lord Wright suggests, the most that can be done is to use common sense and obtain guidance from the many reported cases in this field. It should be noted, however, that the ordinary use of home will not be amount to a nuisance, even if it discomforts your neighbor due to poor soundproofing or insulation. In Baxter versus Camden, a tenant of a flat complained of the noise created by her immediate neighbor. Also, tenants of the defendant, the day-to-day noise of the tenants were made worse because the property had been converted into flats. Without proper sound insulation, the Court of Appeal dismissed the claim in nuisance on the ground that occupants of low cost, high destiny housing must be expected to tolerate high levels of noise from their neighbors than other in more substantial and spacious premises. The test is not of reasonable care. It is no defense to prove that the defendant had taken all reasonable care to prevent the nuisance occurring. The court will look at the result of the defendant's conduct, that is, the impact upon the claimant. आसान अल्फाज में इस सारी हेडिंग की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि एक स्पेसिफिक सर्टेन फार्मूला या क्राइटेरिया सेट नहीं किया जा सकता कि कौन सा एक्ट जो है वो न्यूसेंस में फॉल कर रहा है और कितनी साउंड आएगी तो कितना नुकसान होगा और किस तरह से आप क्लेमेंट जो है वो क्लेम कर सकता है और डिफेंडेंट को लायबल डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, उसकी उन्होंने एक केस एग्जांपल दी हुई है जिसमें फ्लैट्स थे, एक घर को उन्होंने फ्लैट्स में कन्वर्ट किया और उसकी कंडीशन ऐसी थी जो साउंड प्रूफ नहीं थी। तो क्लेमेंट्स जो है वो क्लेम लेके गए कोर्ट में कि इन्होंने जो घर बनाया हुआ है साउंड प्रूफ नहीं है और इसकी वजह से हम जो है अफेक्ट होते हैं। तो कोर्ट ने उनका क्लेम रिजेक्ट किया हुआ है और कोर्ट ने ये बात की हुई है कि अगर तुम्हें साउंड से ज्यादा मसला तो अपने घर जो है ना वो अच्छे जगह पे जाके बनाओ, जब गरीब जगह पे घर बनाओगे तो फिर यही हालात होगा। ठीक है, तो मतलब कि जो लो कॉस्ट लिविंग होगी वहां पे इस तरह की चीजें एक्सपेक्टेड होंगी। ठीक है, जहाँ पे हाई लेवल की बिल्डिंग्स बनी होगी वहां पे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उनका क्राइटेरिया जो है वो उतना ही अच्छा होगा हर चीज में, क्वालिटी में, बाकी सारे इफेक्ट में, उनका स्ट्रक्चर भी हर चीज वो इफेक्ट वो उतनी ही अच्छी होगी और आप उसी हिसाब से एक्सपेक्ट करेंगे कि जो डिफेंडेंट है वो किस हद तक लायबल हो सकता है। अच्छा, अब ये चीजें जो है इसको कोई प्रिंसिपल ऐसा नहीं है जिससे जो क्राइटेरिया कोई ऐसा नहीं है जिससे आप ये चीजें मेजर कर सके कि जी किस हद तक जो है वो चीजें होंगी तो वो रीजनेबल होंगी या किस हद तक नहीं होंगी। लेकिन कुछ प्रिंसिपल लेट डाउन किए हैं जिनसे आप ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि रीजनेबलनेस क्या चीज है। ठीक है, फैक्टर्स डिटरमिनिंग रीजनेबल यूज, यहीं पे थे ना हम। Damage to property or personal discomfort. The courts are more willing to find a nuisance where physical damage to property has been caused and tend to ignore factors such as the nature of the locality discussed below. Personal discomfort will normally have to be substantial to merit a response. The nature of the locality.
क्या अजीब सा नाम लिखा हुआ है। LG stated classically in what would be a nuisance in Belvedere case would not necessarily be so in Bermondsey. This means that the nuisance will be judged according to the area in which it occurs. For example, emission of smoke from a factory will not be considered a nuisance in an industrial state, but would be likely to be found to be nuisance in a largely residential area. Planning permission is not enough by itself to change the nature of the locality, although this may occur as a matter of fact due to investment in the area. In Gillingham Borough Council versus Medway Company Limited, planning permission to develop a commercial dock was held to have changed the character of the neighborhood, and the local residents were therefore unable to claim a nuisance for the disturbance it created. However, in Wheeler versus JJ's London Limited, it was held that the granting of planning permission to facilitate an activity on a site already used for that purpose does not carry with it an immunity in nuisance in respect of implementation of that planning permission. ठीक है जी. The defendants in Wheeler had obtained planning permission for two pig weaning houses on a site already used for that purpose. In response to the plaintiff's claim in nuisance, the defendant contended that since they had obtained planning permission, any smell emanating from the pigs kept in the weaning houses could not amount to a nuisance. Here, the Court of Appeal found the defendants liable. Thornton LJ said it would, in my opinion, be a nuisance of be a misuse of language to describe what has happened in the present case as a change in the character of the neighborhood. It is a change of use of a very small piece of land, a little over 350 square meters according to the dimensions on the plan, for the benefit of the applicant and to the detriment of the objectors in the quiet enjoyment of their house. It is not a strategic planning decision affected by the consideration of public interest unless one is prepared to accept that any planning decision authority, any nuisance which must inevitably come from come from it, the argument that the nuisance was authorized by planning permission in this case must fail. ठीक है जी, समझ आ गई है साथ साथ वो जो उन्होंने शेड बनाया हुआ था वो 350 स्क्वायर मीटर पिग्स के लिए. साथ प्लीज तुम्हारे इल्म में इजाफा फरमाएं. यार मुझे ये नहीं मतलब मसला कि साथ बताता जी, मुझे ये मसला है कि पूछते नहीं. मैं तो अपनी तरफ से क्लियर कर चुका हूँ, इसमें कोई ऐसी चीज कंफ्यूजिंग थी नहीं जो एक्सप्लेन करने वाली है. जी थी कोई चीज एक्सप्लेन करने वाली? वो तो मैंने बता दी है ना, उसमें तो कुछ बताने वाला था ही नहीं.
साथ बताएगा, सॉरी दानिश बताएगा। नहीं नहीं, जो पढ़ा है हमने वही एक्सप्लेन कर। नहीं नहीं, आप ओवरऑल प्रिंसिपल एक्सप्लेन करें ना, the factors and that would determine the reasonableness of use. इसे पिछली स्लाइड। हाँ, जिस्ट दे दें, एक जिस्ट। ठीक है। किपिक वाला बहुत बाद में है, उससे पहले हमने 2 केस और पढ़े। नहीं, साथ बिल्कुल बदनाम नहीं, किसने क्या साथ बदनाम। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक चीज में कुछ और कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, दूसरे में फिर कुछ और कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। इसका यार मुझे अभी केस का टाइटल याद नहीं है, वो एयरपोर्ट से रिलेटेड केस था, वो बहुत पुराना केस है। हाँ, वो एयरपोर्ट से रिलेटेड केस था, वो भी मैं ये कोट करते हैं केस। नहीं नहीं, वैसे ये किसी सोसाइटी ने क्लेम किया था, वो फार्म पिग फार्म नहीं था, वो किसी सोसाइटी का क्लेम था। केस का टाइटल मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने फिर से गूगल बहुत करने की कोशिश की, गूगल में मिलता नहीं है इस तरह केस। बहुत रेयर होता है कि आपने केस का अगर आप रेफरेंस साथ ना दे तो मिल जाए, मुझे याद नहीं। वो यूके का केस था, सोसाइटी का क्लेम था न्यूसेंस के अंडर ही, और एयरपोर्ट पे था। हमारे तो यहाँ पे सोसाइटियां बेचते हैं ना, एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पे, एयरपोर्ट से 15 मिनट की दूरी पे, क्या के वहां पे ये जो इस तरह की सोसाइटीज होती हैं, उनकी प्राइसेस सबसे कम होती है, उनके पीस ऑफ माइंड नहीं है। किधर? नहीं नहीं, वो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे घर के पास एयरपोर्ट था, मतलब हम अगर जाए ना एयरपोर्ट, तो हमें हार्डली 10 मिनट लगते थे ट्रैवल रोड से। ट्रैवल रोड देखा है ना, ट्रैवल रोड से हार्डली 10 मिनट लगते थे, ओल्ड एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, अब तो चला गया ना वो दूर उधर। रात को नींद नहीं आती थी एयरपोर्ट पे, अगर ये जहाज स्टार्ट खड़ा, इतना शोर होता था। ठीक है, हाँ यहाँ से मैंने निकाल दिया। नहीं, मैं उसके उसके बाद उसके अलावा भी बता रहा हूँ, कह रहे हैं ना 2-3 फ्लाइट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो तो चलो हम उस चीज के आदी हो गए थे कि जहाज गुजरा तो बस चला गया, तो कभी आंख खुलती थी कभी नहीं खुलती, लेकिन वहाँ जहाज स्टार्ट रनवे पे खड़ा हुआ है। अच्छा, रनवे ज्यादा दूर नहीं थी। ठीक है, रनवे मतलब आपने चांदनी चौक के पास वाला एरिया विजिट किया आपने से किसी ने? हाँ, ठीक है, चांदनी चौक के लेफ्ट साइड बनती है मेरी, अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हो ना, घर है सी ब्लॉक। ठीक है, तो उसके पास है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वालों का कैंप। ठीक है, वो वो सारा आगे जो है ना, वो कैंप तो बनाया है उन्होंने, बाउंड्री वॉल आप बनाई है उसकी। उससे पहले हम उसके सामने ग्राउंड बना हुआ है, जहाँ पे इन्होंने शहबाज शरीफ पार्क बना दिया है, कॉर्नर पे ना शहबाज शरीफ पार्क बना दिया। वो सारा कचरा कुंडी था, कचरा ही कचरा पड़ा हुआ था, तो वहां पे मेट्रो बन रही थी, तो मिट्टी के टीले बन रहे थे, कोई 12-12 14-14 फुट की हाइट होगी थी, उससे भी ज्यादा ऊंची होगी।
आप अगर उस पे खड़े हो जाएं तो आप जहाज आपको सामने रनवे पे नजर आएगा, कितना नजदीक था रनवे, तबाही होती थी। और स्पेशली तो अब चलो ये फिर भी बर्दाश्त है कि जहाज आया और टेक ऑफ कर गया, जान छोड़ी। वो जो एयरपोर्ट पे स्टार्ट खड़ा होता था, आधा घंटा नहीं बकर 2-2 घंटे के लिए स्टार्ट खड़ा होता था। मैं कहता यार इनके पास कहाँ से इतना पेट्रोल आता है, इतनी देर स्टार्ट खड़ा है, उड़ा लो भाई, जान छोड़ो हमारी भी। मतलब ये KRL है यहाँ पे, आप KRL ग्राउंड बना हुआ है ना, KRL ग्राउंड यहाँ पे पास ही है। KRL ग्राउंड में अगर आप गए हैं ना खेलने के लिए, तो उनने सिटिंग अरेंजमेंट बनाया है, क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट बनाया है, वहाँ पे आप बैठे होंगे सिटिंग अरेंजमेंट में। आप लास्ट स्टेप पे जाके देखेंगे ना तो 7 जहाज पार्क, KRL और एयरपोर्ट की जो बाउंड्री वॉल है वो साथ साथ, मतलब आप वहां से दूसरी तरफ देखें जहाज पार्क यहाँ पे बेच रहे होते हैं। तो यहाँ पे जहाज गुजरता था, इतने नजदीक से गुजरता, हम शोगल लगाते थे कि हमारे घर के पास जहाज इतना नजदीक से जाता, पत्थर मारो जहाज गिर जाए। और वाकई इतना नजदीक से जाता। हम्म। नहीं। हाँ, ये होता था कि वो जो फ्रेम लगे होते थे ना उनके, वो सही खड़कते होते भाई। मतलब आपने वो जंगला लगवाया हुआ है ना खिड़कियों के आगे उसको प्रोटेक्शन के लिए, तो तबाही खड़कते होते थे जब जहाज गुजरता। मतलब हमारे मेहमान अगर आए होते थे ना गांव से या लाहौर से, कहीं से आगे पीछे से, ठीक है उनके, उनके बच्चे अगर साथ तो लिटरली रो के उड़ जाते थे, इतनी आवाज होती थी जहाज। किनकी? नहीं, वो मैं कह रहा हूँ सोसाइटीज ने नया काम स्टार्ट किया है ना, तो सोसाइटीज जो है वो बेच रही होती हैं अपने मकान एयरपोर्ट से 15 मिनट की मुसाफत पे, 1 मिनट एयरपोर्ट से 10 मिनट की मुसाफत। ज्यादा वो उस्ता नहीं है मुनीर, वो ज्यादा सोसाइटी बना ली ना, आप मार्केट डेवलप कर लें। हाँ, सोसाइटी बना ली ना उन्होंने, तो आप मार्केट डेवलप कर लें। मार्केट डेवलप करने का क्या तरीका है? 2-3 तरीके हैं मार्केट डेवलप करने के। दोस्त मेरा वो इम्पोर्टेड गाड़ियों का काम करता है, जापान से इम्पोर्ट करता है गाड़ियाँ, ठीक है। उसने मुझे बताया कि जब हम पहले गाड़ी इम्पोर्ट करते थे ना, वेट्स, ठीक है, तो वेट्स के ऊपर हम 4-4 लाख रुपए कमाते थे। और ये मैं आपको उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब वेट्स का लेटेस्ट मॉडल जो है ना वो आपको 10 लाख में, 8 लाख में, 10 लाख में मिल जाता, ठीक है। उस टाइम वो कह रहा था कि हमने वेट्स के ऊपर 4-4 लाख रुपए कमाया हुआ है। मीन्स कि उन्होंने वहां से मंगवाई, डीलर्स ने यहाँ पे, अगर वहां से उनको गाड़ी यहाँ पे मंगवा के क्लियर करवा के 4 लाख रुपए की पड़ गई है ना, ठीक है, तो आगे वो मार्केट में 8 लाख रुपए की अगर वो बेच रही है, तो मार्केट में उसकी लॉन्चिंग प्राइस 8 लाख रुपया ही होगी। उससे ऊपर जाएगी गाड़ी की प्राइस, नीचे कभी नहीं आएगी। मार्केट सेट कर दिया आपने, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम ये होता है कि इनने अपने बायर्स बिठाए हुए होते हैं सोसाइटीज में, अपने बायर्स बिठाए हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, जब बैलेटिंग होती है, सोसाइटी लॉन्च होती है, वो बाय करना शुरू करते हैं। तो बाय करते हैं, उसके बाद जब मुकम्मल हो जाता है, उस जब फिर वो सेल करना शुरू करते हैं तो वो रेट बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, वो रेट बढ़ाना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने प्लॉट लिया था 20 लाख 25 लाख रुपए, ठीक है, वो क्लोज हो गया सेक्टर, ठीक है। अब उन्होंने अगला भी लॉन्च करना है और साथ में इसके भी मामला क्लियर करने हैं।
उसकी फाइल 10 लाख रुपए ऊपर बढ़ा के बेचना शुरू कर देंगे, मार्केट डेवलप हो जाए तो कहेंगे अच्छा जी, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इस टेन्योर में पिछले 10-15 सालों में सिवाय प्रॉपर्टी के ना कुछ बना है ना कुछ बिका है। वैसे तो आप हिस्ट्री उठा के देखें ना तो यहीं पे हम रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, ना कुछ बना है और कुछ ना कुछ बिका है। 20 versus Lawrence, 13 concerned an alleged noise nuisance arising from a motor sports stadium for which planning permission had been granted. In this case, the Supreme Court reviewed the law of nuisance and considered in relationship between planning control and the tort of nuisance, the right by prescription to commit a nuisance and the argument that the claimant came to the nuisance. The Supreme Court reviewed the extent to which a grant of planning permission might change the character of a neighborhood and considered the approach to be adopted by the court when deciding whether to grant an injunction to restrain a nuisance or whether to award damages instead. The court held that mere fact that the activity which is said to give rise to the nuisance has the benefit of a planning permission is normally of no assistance to the defendant. Lord, एक मिनट यार, नहीं वो स्लाइड चेंज हो. Lord New Burgess said a planning authority has to consider the effect of proposed development on occupiers of neighboring land, but that is merely one of the factors which has to be taken into account. The planning authority can be expected to balance various competing interests, which will often be multifarious in nature, as best as it can in the overall public interest, bearing in mind relevant planning guidelines. Some of those sectors, such as many political and economic considerations, which properly may play a part in the thinking of the members of a planning authority, would play no part in the assessment of whether a particular activity constitutes a nuisance, unless the law of nuisance is to be changed fairly radically. Next is duration and frequency. This is a matter of common sense. The longer and more frequent the interference, the more likely it will be found to be a nuisance. The case so and so, but in such cases, this does not necessarily exclude an isolated escape of sufficient gravity, but in such cases, the claimant is more likely to sue under the rule in Land versus Fletcher. Utility of defendant's conduct. This is not an important consideration. Private nuisance is concerned with the result of the defendant's conduct on the claimant and not on the community as a whole. It may, however, influence the court in exercising its equitable jurisdiction whether to grant injunction. बकर असाइनमेंट मुकम्मल कर दी यार, मैंने कंप्लीट चेक नहीं. अच्छा, हाँ, बस बंदा भी जो है वो खतरनाक है. मुझे कर कह रहा है, मैंने स्टूडेंट्स को बता दिया है कि मैंने 3 चीजें पूछी हुई हैं और आपने एक भी नहीं बताई, तो मैं तो उनको फेल करना है. कि यार ये तो जुल्म नहीं है. कह रहा नहीं, मैंने उनको बताया है अगर नहीं करेंगे तो मैं तो फेल करूँ, मैंने तो पास नहीं करना उनको. जब मैंने उनको बताया तो फिर वो सारी चीजें पूरी कर दी. क्या चीज? हाँ. Case law example in Miller versus Jackson, the plaintiff bought a house in 1972 in such a location that it was inevitable that cricket balls from a cricket ground nearby would be hit into the garden.
Cricket had been played on the ground since 1905. Cricket had been played on the ground since 1905, but the plaintiff contended that since the house was built, it had become a substantial interference and claimed in negligence and in nuisance. The Court of Appeal found that the playing of cricket constituted an unreasonable interference with the plaintiff's enjoyment of land and was therefore a nuisance. The majority considered that the social utility of cricket could not justify a substantial interference in the plaintiff's enjoyment of their land, but no injunctions was granted to restrain the cricket. The court took the view that the utility of the club outweighed the plaintiff's interest. शुक्र है मैंने ये ना हो क्रिकेट बंद करवा दे नहीं शुक्र है ना एंड में मैंने कहा मुझे लग रहा था कि बंद करवा देंगे abnormal sensitivity. If the complaint is based on the abnormal sensitivity of the claimant, the court will not interfere. This would offer the claimant far too much protection at the defendant's expense. For example, the claimant may not be able to withstand any noise while working. It would clearly be unjust for the law to allow the claimant to stop the defendant making any noise during this period. The leading case in Robinson versus Gilbert, here the complainant related to hot air which affected brown paper stored in the plaintiff's part of the building and which had come from the lower part of the building in which the defendant operated a business. The court refused the claim. The heat was not so high that it would affect ordinary paper or even the plaintiff's workforce. The damage was due to exceptionally delicate nature of the plaintiff's trade. This would not amount to a nuisance. If, however, the interference would have affected ordinary paper, the plaintiff would have been able to claim the full extent of his losses. Recovery for harm to orchards when such fumes would have damaged any flowers bloom. साथ चार्ज हो गया चार्ज हो गया वेरी गुड वो तो एनी टाइम बैटरी चार्ज रहती है उसकी मोबाइल का मैंने हो गया वो और वजह है ना और वजह चार्ज एनी टाइम रहता अच्छा जी बेसिकली इसमें जो प्रिंसिपल लेट डाउन कर रहा है आज पता क्या बता रहा है वो ये बता रहा है कि मोबाइल तो चार्ज हो जाता थोड़ा इधर फोकस कर दो वो ये कह रहा है कि दानिश हंस रहा है लेकिन दानिश को खुद भी नहीं पता नहीं वो उसके इसके बाद से साथ ही बहुत अलर्ट है अब हाँ कहना छोड़ दिया है इसकी आदत थी ना वरना आज भी सुबह मैंने पूछा है ना तो पहले फिर यही पे रुक गया आधे में रुक गया था इसने कहा ये गलत होने जा रहा है इसके सब कॉन्शियसनेस को जोड़ा कि नहीं भाई गलत डायरेक्शन में जा रहे हो
मतलब कोई चीज अगर उसकी नेचर जो है वो अब नॉर्मल है, मतलब उसमें सेंसिटिविटी ज्यादा है, ठीक है, और कोई नॉर्मल बिहेवियर उसको इफेक्ट करता है, तो ऐसा क्लेम जो है वो न्यूसेंस में आप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे उन्होंने एक केस कोट किया हुआ है, उसमें एक बंदे का बिजनेस था पेपर का, ब्राउन पेपर का, ठीक है, और दूसरे बंदे के रेजिडेंस से या उसकी शॉप से हीट ब्लो हुई, जिससे वो पेपर डैमेज हो, ठीक है, तो वो जिसका पेपर डैमेज हुआ उसके अगेंस्ट क्लेम लेके गया, कोर्ट ने उसका क्लेम रिफ्यूज किया। क्यों? क्योंकि जो पेपर था उसकी नेचर जो है वो ऑर्डिनरी पेपर से अलग थी, ठीक है, और जो हीट थी वो इतनी थी कि अगर वो ऑर्डिनरी पेपर होता तो वो रेजिस्ट कर जाता उस हीट को। तो मतलब इस केस में जिस चीज के अगेंस्ट वो क्लेम मांग रहा है उसकी अपनी नेचर ही अब नॉर्मल है, मतलब जिस पेपर जो डैमेज हुआ है पेपर, उसके अगेंस्ट जो कंपनसेशन मांग रहा है उसकी नेचर अब नॉर्मल है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट कोर्ट जो है वो क्लेम नहीं देगी। ठीक हो क्या जी? A case that gives a valuable insight into the way of courts regard factors such as locality and sensitivity is Fain versus the Board of Trustees of the Tate Gallery. Here, a private nuisance action was brought by the owners of luxury flats that were intrusively overlooked by a viewing deck at the neighboring Tate Gallery. Finding in favor of the defendants, Man J cited the need for give and take in modern society and observed in an inner city urban environment with a considerable amount of tourist activity and occupant can expect less privacy than perhaps a rural occupant might। ठीक है जी, उसमें उसको उन्होंने दो वजूहात की बिना पे रिलीफ दिया है। पहली बात ये है कि वो एक अमीर आदमी था, जिस सोसाइटी में जिस जगह पे वो रह रहा था वहां पे एलीट क्लास रहती थी, ठीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वहां पे अगर कोई रह रहा है तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी हाई होंगी। मतलब आप किसी महंगी जगह पे इसीलिए रह रहे होंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज मिले, और अगर वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि आपकी जो राइट्स हैं वो फुलफिल नहीं। ऑक्यूपेंट का मतलब ये होता है जो कोई चीज ऑक्यूपाई कर रहा हो, उसकी पोजेशन में हो, कब्जा कर। ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी पड़ गया ये बता, और अभी मुझसे पूछ रहा है कि ऑक्यूपेंट क्या है। ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी नहीं पढ़ाया था मैंने? क्या है ऑक्यूपायर लायबिलिटी? क्या है? जबरदस्त। ये अब इसने पता है काम किया है, कि इसने काम किया ये है कि इसने अपनी कॉमन सेंस यूटिलाइज की है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं करता, वरना ये जवाब दे दे आराम से। The Court of Appeal upheld the ruling against the claimants and denied any further option of taking the case to the Supreme Court. Significantly, it went on to reject the judge's option on the possible independence between nuisance and privacy law. For this, it set out 5 reasons, among them the difficulty in creating clear legal guidance on when overlooking constituted an interference with amenity, and also the inconsistent policy objective of the law nuisance compared to those of the developing law on privacy। ठीक है जी। जल्दी से स्लाइड चेंज करना शुरू कर दे। स्लाइड नंबर कौन सा है?
Malice. The state of mind of the defendant would also seem to be relevant in assessing whether the defendant's use of their land is reasonable. For example, in Christie versus Davy, the plaintiff succeeded in obtaining an injunction when her neighbor, frustrated by a noise of music lesson in her home, expressed his annoyance by knocking on the party wall, beating praise, whistling, and shaking. In the words of North J, what was done by the defendant was done only for the purpose of annoyance, and in my opinion, it was not a legitimate use of the defendant's house. See also Hollywood Silver Fox Farm Limited versus Emmett. Here, the defendant's premises adjoined the plaintiff's Silver Fox farm. In attempting to prevent the foxes from breeding, the defendant discharged guns on his own land as near as possible to the boundary of the plaintiff land to scare the foxes. Like Norton J. considered the intention of the defendant to be relevant in nuisance and an injunction and damage were awarded. Who can be sued? In any action in nuisance, it is important to identify potential defendants. The most obvious is the person creating the nuisance. The creator, however, part of the skill of a lawyer is in identifying other potential defendants. For example, the creator's landlord or employer. Equally, should you be unable to identify the creator, for example, if the nuisance was caused by a trespasser who has since disappeared, it is important to be able to bring action against other parties, such as the local council, who may be able to intervene to assist. ठीक हो गया जी, तो आप जितने अच्छे वकील होंगे उतना अच्छा आप क्लेम कर सकते हैं. Employers, where the occupier of the land exercise control over employees who cause a nuisance in the course of employment, the occupier will be liable. This will extend to liability for independent contractors where the employer owes a non-delegable duty to the claimant, TK so and so. ठीक हो गया जी? An occupier who has adopted or continued a nuisance, this is established in the leading case of Seldy Dunfield, which consolidated pre-existing law and applies to both private and public nuisances. Here, a local authority, without the defendant permission and therefore as a trespasser, had placed a drainage pipe in the ditch on the defendant's land with the granting designed to keep out leaves. The granted, the grating had not been fixed in the correct position, with the result that during a heavy rainstorm, the pipe became choked with the leaves and water overflowed onto the plaintiff land. The House of Lords held the defendant liable. The House of Lords held the defendant liable. He had adopted the nuisance by using the drain for his own purposes to drain water from his land. He had also continued the nuisance because his manager should have realized the risk of flooding created by obstruction and taken reasonable steps above it. Liability thus arises in two ways, which are both fault-based. Adopting a nuisance, that is using a state of affairs for your own purposes, ठीक है जी? Or continuing a nuisance, that is with actual or presumed knowledge of the state of affairs, failing to take reasonably prompt and efficient steps to abate it. ठीक है जी? दो चीजें हैं न्यूसेंस की. ठीक है जी? पहली चीज ये कि आप कोई ऐसे एक्टिविटी करते हैं जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचता है, और दूसरा ये
कि एक तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कोई नुकसान पहुंच रहा है और आप जानते हैं कि किसी को इससे नुकसान हो सकता है, तो आप उसको कॉन्टिन्यूटी में रखते हैं। ठीक हो गया जी। इट इज essentially a rule of good sense and convenience where, as in certain field, the occupier of the land is best placed to deal with the nuisance. They will be able if they are found to be at fault. It has been applied to activities of trespassers on occupied land and acts of nature's failure to extinguish with adequate care a tree which had been struck by lightning and had brought fire. ठीक हो गया जी। Failure to protect neighboring villages from the effect of subsidence to the defendant's land. Leakey extended the principle in Goldman to include nuisances caused by the natural condition of the land itself. The defendants were liable for failing to take appropriate action when they knew of the risk. Being fault-based, unlike the usual test for private nuisance, the courts apply a very distinctive test for liability. In finding liability in Goldman, Lord Wilberforce added that defendants' conduct should be judged in the light of their resources and ability to act in the circumstances. In his lordship view, it would be unjust to demand a standard of conduct of which the defendant was not capable, or to require an excessive expenditure of money. If therefore the defendant is poor and abatement will require vast expense, the defendant will not be considered negligent. Equally less will be expected of the infirm than of the able-bodied. ठीक है जी, बेसिकली वो ये समझा रहा है कि हमने जहाँ पे गरीब आदमी को तंग किया था ऊपर कि तुम्हें शोर बर्दाश्त करना पड़ेगा, वहाँ पे हम यही बता रहे हैं कि अगर तुम गरीब हो और खर्चा करके अपने चीजों को ठीक नहीं कर सकते, क्या, तो उस उस सूरत में भी उसके अगेंस्ट न्यूसेंस का क्लेम नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर किसी न्यूसेंस को अवॉइड करने के लिए मेजर एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड हैं और डिफेंडेंट की पोजीशन नहीं है उनको बेयर करने की, तो उसकी नेग्लिजेंस कंसिडर नहीं की जाएगी। ठीक हो गया, कितनी हो गई हैं? कह रहे हैं एक साथ ही कर लेंगे, ज्यादा नहीं है। नहीं, लाइव सिलेंडर है ही नहीं ना, लाइव सिलेंडर के लिए मैं अलग से नोट्स तैयार। Most controversy relates to the first category of claims, which raises difficult questions as practice. The basic rule is that the court will examine the purpose for which the promises are let and consider whether the nuisance was necessary consequence of the letting. If so, the landlord will be liable for authorizing the nuisance. Tetley versus Chitty. In practice, complication arise. For example, in Smith versus Scott, a local authority was not found to have authorized the nuisance caused by a family they housed, even when they were known to be a problem family. It could not be said that the council had authorized the Scots to commit a nuisance when it had inserted in their tenancy agreement a clause expressly prohibiting the commission of such acts. This would seem unduly favorable to the landlord. ठीक हो गया जी। मतलब ये एक पॉइंट से देखा जाए तो दूसरे कॉन्सेप्ट को भी निगेट कर रहा है। फिर इसमें तो लैंडलॉर्ड की जो एक्सेप्शन है, लैंडलॉर्ड की जो एक्सक्लूजन है इस सारे एक्ट से, वो तो खत्म हो जाएगी अगर इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में डील करें। जैसे कि प्रीवियसली हमने जब ये स्टडी किया तो हम उसमें ये चीज देख रहे थे कि अगर आपने किसी एग्रीमेंट में कोई एक्सक्लूजन क्लॉज डाला हुआ है, ठीक है, तो फिर भी आपको कोर्ट्स लायबल डिक्लेयर कर रही थी कि आप अपनी ड्यूटी जो है उससे एक्सक्लूजन क्लॉज ऐड करके अपनी जान नहीं छुड़वा सकते, लेकिन यहाँ पे उसको उन्होंने रिलीफ दे दी है। ठीक है जी। केस लॉ एग्जांपल, such potential difficulties are manifest in two court
of appeal decision of 2000 which are difficult to reconcile. Hussain versus Lancaster and Lippiett versus South Gloucestershire. They appear to reach different conclusions, and you should take particular note of the way in which the Court of Appeal in Lippiett seeks to circumvent the earlier decision in Hussain. The question in both cases was whether the local authority would be liable for the actions of their tenant in Hussain or their licenses. ठीक है जी, in Lippiett. Hussain concerned a campaign of racial harassment against the shopkeeper on the defendant's housing estate. It was alleged that the council, as landlords, should have intervened to prevent their tenants from harassing the Hussain. The Court of Appeal rejected his claim. The council standard from form tenancy agreement had included a clause instructing the tenant not to discriminate against or harass any residents or visitor. In the circumstances, the council could not be said to have authorized these acts. Second, the tenant's action did not involve a use of their land, which would be required to render the nuisance actionable. The Court of Appeal in Lippiett took a different view. Here, travelers had been allowed to stay on council land and had caused havoc by trespassing, dumping rubbish, and other acts of vandalism on neighboring land. In finding the council liable, Hussain was distinguished on two grounds. The travelers has used the land to commit the nuisance by using it as a launching pad to commit acts of nuisance on neighboring properties. The council was more likely liable for the act of trespassers and licensees than tenants, as in a sense. While tenants have statutory protection, it is easier to evict trespasser and licenses from land. By failing to do so within a reasonable period of time, the council found itself liable. It must be question यार कोई चीज समझ ना आए तो प्लीज पूछते जाना तो कंक्लूड करें ठीक है It must be questioned whether this distinction is a convincing one. It is far from established that a private nuisance must emanate from use of land. It will in most cases, but is this the same as a rule? C case so and so. इसके बाद जी defenses हैं जी. In advising a potential claimant, it is important to identify potential defenses. Only when these are assessed can you advise whether a claimant is likely to succeed. There are a number of defenses specific to nuisance in addition to the ordinary defenses of voluntary assumption of risk and contributory negligence. Contributory negligence याद है ना? याद है ना? कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस याद है उसने सबसे पहले साथ की तरफ देखा अबू बकर ने भी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के ऊपर और 3 दफा मैं इस बंदे को बता चुका हूँ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस 3 दफा उसकी भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है किसी न किसी को ठीक है जी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी 20 years prescription the act of a stranger ठीक है जी statutory authority क्या है if the nuisance is caused by the activities of a local authority or any other body acting under statutory powers it may be a defense that
it is acting within the scope of its authority and therefore authorized by Parliament to act in this way. ठीक है जी, लीगल कवरिंग होनी चाहिए उसके पास। अगर उसका एक्ट ऐसा है जिसको कोई क्लेम कर रहा है कि इससे न्यूसेंस क्रिएट हो सकती है, तो उसके पास कोई लीगल फुटिंग होगी तो वो उसको डिफेंस प्रोवाइड करेगी। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ interpretation of the relevant act. In the absence of an express provision, the court will interpret the act to ascertain whether authorization is implied. ठीक है, C case so and so where the nuisance is the inevitable consequence of the performance of the authorized operation, a defense will lie. It is not inevitable, however, if caused by the negligence of the defendant. Equally, the statute may contain a nuisance clause providing that nothing in act shall exonerate the undertaker from liability for the nuisance. डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट वर्सेस नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ठीक हो गया जी। जहां पे बैकिंग होगी उसकी लॉ की तरफ से, वहां पे उसके ऊपर कोई लायबिलिटी अक्रू नहीं अंडर न्यूसेंस, ये याद रखें। ठीक हो गया। एक्सेप्शंस भी हैं जी, जैसे काउंसिल है ना, वहां पे जो लोकल काउंसिल है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, अगर वो कोई ऐसा एक्ट ऐसा फंक्शन परफॉर्म करती है जो पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट में है और उसके नेबरिंग में कोई अगर रेजिडेंट है, वो ये क्लेम करता है कि यहाँ पे लेट सपोज वो ट्यूबवेल लगा देते हैं, एग्जांपल देते हैं, तो ट्यूबवेल लगा देते हैं। अब वो ट्यूबवेल लगता है किसी घर के पास, ठीक है, उसकी मोटर ऑन होती है, उस मोटर का शोर होता है, ठीक है, या वहाँ पे अगर टैब्स लगी हुई हैं तो लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं पानी के लिए, जो हमारी लोकल यहाँ पे काउंसिल्स में काम चल रहा होता है, तो उससे शोर शराबा होगा, सारे मामलात होंगे। ठीक हो गया, तो उसको वो डिफेंस हासिल है कि ये जो एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रही है ये सोसाइटीज की बेटरमेंट के लिए, तो कोई जाके ये क्लेम नहीं कर सकता कि इसकी जो ये इनका जो ये फंक्शन है या इन्होंने जो ये चीज प्लांट की हुई यहाँ पे इसकी वजह से हमें नुकसान है। ठीक है, अगर उसको लॉ बैक कर रहा है तो उसके उनके पास इस चीज का डिफेंस है कि ये चीज हमें लॉ ने प्रोवाइड की हुई है। ठीक हो गया जी। 20 years prescription. This provides a defense where the nuisance has interfered with the claimant interest in land for more than 20 years. 2 points should be noted. It does not apply to public nuisance and time will only start from the moment the claimant is aware of the nuisance. In case the defendant premises adjoin those of the plaintiff, a medical practitioner, for over 20 years, the noise and vibration from the defendant business as a confectioner had not interfered with the plaintiff's use of the land. The plaintiff then built a consulting home in the garden and complained of the noise. Prescription was pleaded, but the defense failed because time ran from when the new building was erected and the nuisance had only commenced from that date. ठीक हो गया जी। The unforeseeable act of a stranger. A reservoir overflowed onto the plaintiff's land in Box versus Jab. The defendant was not liable on the grounds that the flood had been caused by the actions of another neighbor, over which the defendant had no knowledge and no control. Note the potential alternative action that Ryland versus Fletcher and negligence in such cases, although the defense could equally apply. Ineffective defenses. It is important to recognize defenses which do not work as to identify those which will oppose the claimant's action. The following are defenses which have been rejected by the courts. Coming to a nuisance, social utility, nuisance due to many. Coming to the nuisance, it is a well-established rule that the claimant may sue even though the nuisance was to the claimant's knowledge in exercise before they arrived at the premises.
In Bliss versus Hall, the plaintiff occupied a property adjoining the premises of the defendant candlemaker. The plaintiff alleged nuisance in the emission of smells and noxious vapors, which resulted from the candle making process. The fact that the business had been carried on in the same premises for 3 years before the plaintiff came to adjoining property did not defeat the plaintiff's claim. The justification for the rule is that it would be unreasonable to expect someone not to purchase land because a neighbor was abusing their rights. This rule was confirmed by the Court of Appeal in Miller versus Jackson. It is no answer to a claim in nuisance for the defendant to show that the plaintiff brought the trouble on his own head by building or coming to live in a house so close to the defendant's premises that he would inevitably be affected by the defendant's activities where no one had been affected previously. जी. However, note Lord Herring, Abu Bakr का दोस्त आ गया. The dissenting view on this point, the principle that it is no defense to argue that the claimant came to the nuisance was reaffirmed by the Supreme Court in Coventry versus Lawrence. Lord Newberger said this is consistent with the notion that nuisance claim should be considered by reference to the give and take as between neighboring occupiers of land. ठीक है. अब ये प्रिंसिपल्स जो है ना ये आपको वेरी करते नजर आएंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे. एक जगह पे किसी जगह पे रिलीफ कोर्ट ग्रांट कर रही होगी, इस जगह पे ग्रांट नहीं करेगी. ठीक है. उसकी वजह ये है कि स्पेसिफाइड रूल्स नहीं. ठीक है. उसमें जो मेजर चीज डिपेंड करेगी वो ये करेगी कि जो जिस फैक्टर को क्लेम किया जा रहा है वो रीजनेबली क्लेम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या उसमें जो डिफेंडेंट है उसका किस हद तक रोल है. ठीक है. तो ये सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे एवेल्युएट कर रही होगी कोर्ट्स, वहां पे डिपेंड करेगा कि दोनों पार्टीज के पास वकील कितना अच्छा. इन अदर वर्ड्स, क्लेम आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, अदरवाइज कोर्ट्स आपको डिफेंस प्रोवाइड नहीं, सो कोर्ट आपको रेमेडी प्रोवाइड नहीं करेगी. ठीक हो गया जी. Utility. This is not a defense, although it may encourage the court to be more flexible in deciding a remedy. In Adam versus yourself, the utility of a fish and chip shop to local poor inhabitants could not justify it present in a fashionable street. ठीक है जी. Due to many, it is no excuse that the defendant was simply one of many causing the nuisance in question. The case so and so, where Chitty J held that if the acts of two persons each being aware of what other is doing amount in the aggregate to what is an actionable wrong, each is amenable to the remedy against the aggregate cause of complaint. Remedies. There are three main remedies to consider: an injunction, abatement, and damages. It is important to consider which remedy would best suit the claimant's need. Does the claimant want to stop the nuisance? If so, they should seek an injunction. Where the nuisance is no longer continuing, the claimant would no doubt be seeking damages. In most cases, the claimant is likely to be seeking an injunction. Injunctions. The main thing to note here is that it is a discretionary remedy and the claimant has no right to an injunction. The court may decide to give damages in lieu of an injunction. Supreme Court case is the Shelfer rules commonly seen as a starting point in considering an award of damages instead of
एन इंजंक्शन। ठीक है जी, लीडिंग केस है। न्यूसेंस में आपका एक्चुअल हार्म जो है उस तरह नहीं होगा जिस तरह आप नेग्लिजेंस में या टॉर्ट के बाकी सारे ऑफेंसेस में पढ़ते हैं। ठीक हो गया। न्यूसेंस में उस तरह आपको बॉडीली हार्म होना जरूरी नहीं, इंजरी सफर करना जरूरी नहीं। ठीक है, किसी चीज से आप इफेक्ट भी हो रहे हैं तब भी आप न्यूसेंस के अंदर क्लेम। ठीक है, अगर आप फॉर द टाइम भी पड़ोसी के चिमनी से निकलने वाले धुएं ने सफोकेट कर दिया फॉर द टाइम भी, ठीक है, तो वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको कोई ये सोच सकता है कि ये नुकसानदेह हो सकती है, अनलेस अनटिल साथ वाले घर में कोई अस्थमा पेशेंट हो। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई लॉस उस तरह आपकी बॉडी पे तो नहीं हुआ ना, आपने कोई इंजरी सफर तो नहीं की ना। आपने अगर थोड़ी देर के लिए धुआं इतना ज्यादा आ गया आपके घर में कि आपको सांस लेने में मसला हुआ है, ये सारे मामला हुए, आपको उसका कोई नुकसान तो पहुंचा नहीं है उसको ना, ना ही वो कोई किसी टेस्ट में आएगा कि इसने स्मोक जो है वो इनहेल किया है। ठीक है, तो उसका क्लेम आप कहाँ पे लेके जाएंगे? हॉस्पिटल डैमेजेस प्रोवाइड करेगा? हॉस्पिटल वाला ने भी कहना है कि ड्रामे करने की जरूरत नहीं, वापस कर दिए। इंजंक्शन, इंजंक्शन क्या है? इंजंक्शन क्या है ये तो पहले तो ये एक्सप्लेन। कोर्ट का ऑर्डर होता है किस कॉन्टेक्स्ट में? ठीक है, और उस इंजंक्शन और डैमेजेस का जो कॉन्सेप्ट करना उसका लीडिंग केस है जो हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, ये लीडिंग केस है जिसमें उन्होंने इंजंक्शन देने की बजाय डैमेजेस दिए। क्या क्या सारों को आज ही कॉल करना है। डैमेजेस के लिए, न्यूसेंस के सिनेरियो में डैमेजेस के लिए आपको एक्चुअल हार्म होना जो है ना, मतलब आपको इंजरी सफर करना ये लाजमी नहीं। ठीक है, इनडायरेक्टली भी आप किसी पॉइंट पे इफेक्ट हो रहे हैं तब भी आप ले सकते हैं। अब मैंने जो एग्जांपल दी थी आपको पहले भी कि मिसाल के तौर पे पड़ोसी ने ऊंची आवाज में गाने लगाए हुए और रोज उसकी प्रैक्टिस है ऊंची आवाज में वो गाने लगाता है, तो उससे आपको फिजिकली तो कोई डैमेज नहीं होता, डिस्टर्बेंस तो क्रिएट हो रही है लेकिन फिजिकल तो कोई डैमेज नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं उसमें तो लग्जरी फ्लैट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। देखें उसकी अगर साउंड जो है वो आपकी प्रेमिसेस तक आ रही है और वो आपको डिस्टर्ब कर रही है तो आपने उसके अगेंस्ट क्लेम लेना है, वो कहाँ पे लेंगे आप? वो न्यूसेंस में आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, वो क्वालिटी की बात हो रही थी, क्वालिटी की बात हो रही थी, उसके साथ वो ये कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो, अगर आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे सस्ते घर बने हुए, लेट्स सपोज, ठीक है, तो इसमें आपके पड़ोसी का कसूर तो नहीं है, आपके घर की दीवारें अगर कमजोर हैं जिसमें से आवाजें आती हैं, ठीक है, तो उसमें आपके पड़ोसी का कसूर तो नहीं है। वही तो कह रहा हूँ कि अब वो कोर्ट्स जो है वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर कि आप अपना क्लेम जो है वो कैसे पोर्ट्रे करते हैं। Provide that whether for a mandatory injunction or to restrain a continuing nuisance, the appropriate remedy may be damages in lieu of an injunction if the injury to the plaintiff legal rights is small. It is one which is capable of being estimated in money. If it is one which can be adequately compensated by a small money payment, it would be oppressive to the defendant to grant an injunction. The Supreme Court in Coventry versus Lauren
took the opportunity to review the court's power to award damages in lieu of an injunction and to remind judges of their broad discretion beyond the boundaries of Shelford rules. Lord Newberger identified public interest as a relevant consideration in reaching this decision, and Lord Sumption said, in my view, the decision in Shelfer is out of date, and it is unfortunate that it has been followed so recently and so slavishly. It was devised for a time in which England and much less crowded when England was much less crowded, when comparatively few people owned property, when conservation was only beginning to a public issue, and when there was no general system of statutory development control.